Hello students, this is Suvendu Das, your physics mentor, and this is our lecture number 2 of our chapter Units and Measurement that is available in class 11 physics. So let's start our topic. So in first lecture, we have discussed regarding your physical quantity and recall those concepts. What we have discussed? Basically, we have covered any physical quantity can be expressed in terms of P is equal to N into U. P is your physical quantity and N is your numerical value and U is your unit. And in that case, we have discussed also N is proportional to 1 by U. More is the unit means lesser will be the numerical value associated with it. That part already covered, and the graph between N and U. That part already covered. And after that, we have discussed types of physical quantities, that is our fundamental quantity and derived quantities, fundamental units, derived units, and what is unit, that part already covered. So in lecture number 2, we will discuss different types of units. So let's start our topic. The following are the different types of units. That is, first we will discuss CGS or CGS system. First is your CGS system. And in this case, remember, in CGS system, C stands for centimeter and your G stands for gram and our S stands for second. And ये तो हमको पता है actually what is centimeter, it is the unit of length, and gram is the unit of mass, and S is the means second, it is the unit of time. It is very common to us, CGS system of unit. And remember, this CGS system of unit is also called Gaussian system or French system. French system of unit. And also remember, the CGS system of unit, it is a metric system. It is also metric system. So regarding CGS system, somehow it is clear to all of you. Next come to our next system of unit, that is your MKS system. Same as the previous, we will discuss MKS. So here M stands for meter, M stands for meter, and our K stands for kilogram, and S stands for second. And it is also well known to us, meter is the unit of length and your kilogram is the unit of mass and S is the unit of time, that means second. And remember, this MKS system of unit, it is also a metric system. It is also a metric system. This is about your MKS system. क्या नेम पे ही सब कुछ अवेलेबल है, MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड. So this is about our MKS system. Next come to FPS system of unit. So here also F stands for foot and our P stands for pound and S stands for second.
That's what we have to write. F stands for foot and P stands for pound, that is LB, and S stands for second. Same thing, foot is the unit of length and your pound is the unit of mass and S is the unit of second, unit of time. Remember, this FPS system of unit, it is not a metric system. So that point we have to write, it is not a metric system. So what is the other name? It is also called British system. British system of units. So what is CGS, MKS and FPS? I think it is clear. Now one thing all of you listen, in between all these things, these all are good, but different region पे क्या होगा? Different region पे different system of units को वो लोग accept कर रहे थे. तो एक बंदा एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाने तक क्या हुआ था? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था. सपोज एक रीजन पे हमारा यूनिट ऑफ लेंथ को मेजर कर रहे हैं फुट पे, कोई दूसरा रीजन पे वो लोग मीटर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो जो बंदा मीटर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो लोग फुट को अडॉप्ट करने से क्या हुआ? दिक्कत हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ. तो इसीलिए क्या हुआ? टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसका 1971 एंड वही सेशन पे ये डिसाइड हुआ वर्ल्ड वाइड हम लोग एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स को एक्सेप्ट करेंगे. जिस रीजन पे ये सब चीज अवेलेबल है ना, उसको चलने दो. इसके अलावा वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम ऑफ यूनिट एक्सेप्ट होगा, दैट इज आवर एसआई यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. तो इसमें क्या डिसाइड हुआ एक्चुअली, देखो नेक्स्ट वी विल डिस्कस एसआई यूनिट. दैट इज सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट. So according to General Conference of Weight and Measure, which was established in 1971, SI unit contains 7 fundamental units and 2 supplementary fundamental units. हम लोग लिस्ट अभी लिखेंगे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल यूनिट्स. वो जो फंडामेंटल क्वांटिटी था हमको पता है एक्चुअली, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और क्वांटिटी ऑफ मैटर. ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उनका जो यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट वो क्या होगा, उसको हम लोग लिस्ट वाइज लिखेंगे और उसके बाद उसका सिंबल भी लिखेंगे. देन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये था हमारा 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटी. यस, तो उसका भी यूनिट को हम लोग सप्लीमेंटरी फंडामेंटल यूनिट ही बोलेंगे. तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन एंड यूनिट को हम लोग लिखेंगे. एंड आज ही सेशन में वो जो सप्लीमेंटरी फंडामेंटल यूनिट के बारे में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो बातें सब. आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू.
नेक्स्ट कम टू अवर जो लिस्ट, मैं अभी लिख रहा हूँ बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, देन उसका यूनिट, देन उसका सिंबल। ओके, तो फर्स्ट क्वांटिटी इज आवर लेंथ, नेक्स्ट वन इज मास, then time, next is temperature, next electric current, next is our luminous intensity, and last one is amount of substance or quantity of matter, or quantity of matter. एंड उसका यूनिट क्या होगा, बेस यूनिट। देखो लेंथ का यूनिट होगा मीटर, का सिंबल क्या है एम। देन मास का होगा तुम्हारा किलोग्राम, नेक्स्ट इज टाइम, उसका है सेकेंड, देन टेम्परेचर केल्विन, देन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज एम्पियर, देन luminous intensity candela, and amount of substance or quantity of matter, इसका क्या होगा मोल। देन उसका सिंबल, तो मीटर का तो सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन कैपिटल के, एम्पियर कैपिटल ए, देन कैंडेला डी, एंड मोल MOL. I think this part is clear. So these are the 7 fundamental quantities and their base units. Next thing, ये भी वहाँ पे डिसाइड हुआ, there are 2 supplementary fundamental units. यहाँ पे मेंशन हम लोग करेंगे supplementary fundamental quantities, and next one is the unit and their symbol. तो इसी हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, वन इज आवर प्लेन एंगल, दूसरा क्या है सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल उसका यूनिट क्या है रेडियन, इसका यूनिट स्टे रेडियन। देन उसका सिंबल के बारे में बात करेंगे तो रेडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे रैड, रेडी, एंड स्टे रेडियन को SR। So this is about the SI units that I have written on this paragraph. So according to General Conference of Weight and Measure, which was established in 1971, SI unit contains 7 fundamental units and 2 supplementary fundamental units. So this part is completely, that is, this part is completely clear to all of you. Now come to next one, what is radian and what is steradian, इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट की हेडिंग रेडियन। देखो तो रेडियन ना प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल से ये पता चल रहा है दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ 2D, 2 डायमेंशन, बिकॉज प्लेन में कितना एक्सिस है, 2 ही एक्सिस है। यस, जो भी 2 एक्सिस ले जाओ, एक्स वाई एक्सिस ले जाओ, जो प्लेन फॉर्म होगा दैट इज एक्स वाई प्लेन, एंड XZ प्लेन भी हो सकता है, YZ प्लेन भी हो सकता है, जो भी। तो एनी 2 एक्सिस का कॉम्बिनेशन में जो प्लेन फॉर्म होगा दैट इज योर 2D, 2 डायमेंशनल। तो और पेज ऑफ पेपर ले जाओ, ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये क्या है एक्चुअली 2 डायमेंशनल, एंड सॉलिड एंगल दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 3 डायमेंशनल केसेस, दैट पार्ट विल बी कवर्ड। वेट, so next is our radian. So here what we have to discuss now, see, एक सर्कल में कंसीडर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सर्कल को देखो अच्छे से, ये है सर्कल का सेंटर, सेंटर को मैं मान रहा हूँ O,
एंड उसका रेडियस क्या होगा, ये उसका रेडियस कैपिटल आर, रेडियस को मैं मान रहा हूँ दिस इज कैपिटल आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। एंड ये सर्कल अभी कहाँ पे फॉर्म हुआ है, प्लेन के ऊपर। सर्कल क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर। तो इन दिस केस सपोज यहाँ पे मैं एक छोटा सा आर्क कंसिडर कर रहा हूँ, ये आर्क देखो, आई थिंक ये दिखाई दे रहा है तुमको, ये जो आर्क ग्रीन कलर में शो कर रहा हूँ, देखो ये जो आर्क दिखाई दे रहा है। हाँ, एक अच्छा चीज बोल रहा हूँ मैं, देखो इन क्लास 11 फिजिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वहां पे क्लियर कर दूंगा मैं तुमको। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ट्रिक में मैं बोल रहा हूँ। सपोज एक लाइन एंड उसका लेंथ क्या है, लेट एल इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। So out of the total length, if I will ask what is the length of this portion, जो छोटा सा हिस्सा में दिखा रहा हूँ ना, दिखाई दे रहा है तुमको, ये छोटा सा हिस्सा का जो लेंथ तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएल। डीएल का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल पार्ट ऑफ एल, डीएल। तो ये टोटल लेंथ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक एल होगा, तो ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है तुमको, ये छोटा सा लेंथ, तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डीएल। तो डीएल क्या है, आउट ऑफ द होल इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जो लाइन के हिसाब से समझ में आ गया व्हाट इज डीएल। उसी तरीके से ये टोटल आर्क दिखाई दे रहा है, ये टोटल आर्क का लेंथ में मान रहा हूँ एस, सपोज एस, एस इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस आर्क। एंड आउट ऑफ द टोटल लेंथ यहाँ पे जो ग्रीन कलर आर्क दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा हिस्सा, लेट इट इज डीएस। अभी समझ में आया। तो ये डीएस क्या है, आउट ऑफ द होल आर्क इट इज ए स्मॉल पार्ट। एंड ये जो डीएस वो सेंटर से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर दिस डीएस अमाउंट ऑफ आर्क मेक्स एन एंगल डी थीटा। सपोज डी थीटा का मतलब ये समझ में आया, ये टोटल आर्क कितना ये से विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 360 डिग्री। तो छोटा सा आर्क कितना एंगल फॉर्म करेगा, सपोज ये 360 डिग्री को मैं मान रहा हूँ थीटा, थीटा इज द टोटल एंगल। तो आउट ऑफ द टोटल इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, तो इसको मान लो डी थीटा, लाइक दिस। तो यहाँ पे डी एस आर्क मेक्स एन एंगल डी थीटा विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हमको ये भी फॉर्मूला पता है, वी नो एंगल इज इक्वल टू हाउ मच, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो एज पर दिस फॉर्मूला वी कैन राइट दिस कंटेंट, एंगल क्या है अभी डी थीटा, आर्क का लेंथ क्या है डी एस, एंड रेडियस क्या है, एंड एंगल का यूनिट में क्या मान रहा था हम लोग, रेडियन। तो डी थीटा इज इक्वल टू एज पर आवर फॉर्मूला, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर रेडियन, डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर रेडियन। अभी मैं तुमको पूछूंगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी थीटा। देखो यही फॉर्मूला से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूं व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी थीटा। डी थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो फॉर डी थीटा टू बी मैक्सिमम विच इंप्लाइज डी थीटा का बदले में हम लोग ए भी लिख पाएंगे डी एस बाई आर मैक्सिमम। डी थीटा को मैक्सिमम होने के लिए डी एस बाई आर को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो आर तो कांस्टेंट है, रेडियस जो भी ले जाओ रेडियस का वैल्यू तो सेम बराबर मिलेगा। तो फॉर डी एस बाई आर टू बी मैक्सिमम, डी एस टू बी मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एस, अभी हमको पता है एक्चुअली व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एस। डी एस का मैक्सिमम वैल्यू हमको पता है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एस इज इक्वल टू total length of the arc in a circle, that is 2 pi r, maximum that is equal to 2 pi r। yes, देखो 10 d थीटा मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, डी एस बाई आर मैक्सिमम, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एस इज योर 2 pi r डिवाइड बाई कितना r, दिस मच रेडियन। एंड फाइनल आंसर हमको ये मिला
इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो डी थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2 पाई रेडियन। यहीं से और भी एक चीज हम लोग लिख पाएंगे, देखो ये पता चल गया हमको व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी थीटा इन दिस केस। यहीं पे हम लोग और एक रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर पाएंगे किसके बीच में, जो एंगल रेडियन एंड डिग्री, रेडियन एंड डिग्री के बीच में रिलेशन कैसा होगा देखो। वेरी सिंपल, वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंड व्हेन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, आर्क का वैल्यू क्या होना चाहिए? 2 पाई आर टोटल लेंथ, 2 पाई कैपिटल, एंड रेडियस इज, एंड उसका यूनिट क्या होगा? रेडियन। कैंसिल होने से क्या मिला हमको? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये चीज समझ में आएगा सबको? तो यही फॉर्मूला से हम लोग बहुत सारा चीज अभी लिख पाएंगे, डिफरेंट डिग्री को हम लोग रेडियन के टर्म से भी लिख पाएंगे। 2 डिवाइड कर दो दोनों साइड पे, तो 180 डिग्री का आंसर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। सेकेंड 2 डिवाइड करो, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अगेन 2 डिवाइड करो, 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू। इफ आई विल आस्क 60 डिग्री इज इक्वल टू यस रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल टू यस रेडियन, कैसे सॉल्व करोगे? वेरी सिंपल, देखो 180 डिग्री का मतलब क्या है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? पाई बाई यूनिटरी मेथड, पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री का मतलब क्या होगा? पाई बाई 180 इंटू 60। आंसर क्या मिला? दैट इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो मैं तो हिंट्स दे रहा हूँ कैसे डिफरेंट एंगल को, कोई भी एंगल को डिग्री फॉर्मेट से हम लोग डिग्री फॉर्मेट यूज ना करके हम लोग रेडियन में अभी यूज करेंगे। इन क्लास 11 फिजिक्स 11 12 अभी जो हायर स्टडी करेंगे ना, रेडियन पे यूज करना बहुत आसान है आपको। तो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। ओके, तो दिस इज अबाउट योर प्लेन एंगल। हाँ, जो रेडियन प्लेन एंगल, यहाँ पे हमको हेडिंग क्या देना था? प्लेन एंगल। अच्छा, हेडिंग को फिट करके हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देंगे प्लेन एंगल। तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है? आई विल आस्क डिफाइन 1 रेडियन। 1 रेडियन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? देखो क्वेश्चन क्या है अभी, डिफाइन डिफाइन 1 रेडियन, ये हमारा क्वेश्चन। सेम एज प्रीवियस, देखो वी नो d theta is equal to ds by r रेडियन। यस, हमको ये फॉर्मूला पता है एक्चुअली ना। देखो मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ ट्रिक के हिसाब से, नो नीड टू राइट द, नो नीड टू मेमोराइज द सेंटेंस। तो डी थीटा इक्वल टू ds by r रेडियन, ये हमको पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी थीटा का आंसर क्या होना चाहिए? 1 रेडियन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी थीटा इक्वल टू 1 रेडियन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी थीटा शुड बी 1 रेडियन। ये दो इक्वेशन को कंपेयर करने से, देखो ये दो इक्वेशन को कंपेयर करने से क्या पता चला हमको? डी एस बाई आर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी एस इज इक्वल टू आर। तो अभी हम लोग नीचे से ऊपर तक चलेंगे अभी। यस, तो कैसे? देखो वी नो डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर रेडियन। अभी मैं तुमको बोल रहा हूं व्हेन डी एस इज इक्वल टू आर, डी थीटा का आंसर क्या होगा? डी थीटा इक्वल टू एस बाई डी एस, और डी एस के बदले में हम लोग आर भी लिख सकते हैं, जो भी तुम्हारा मन चाहे। तो इंस्टेड ऑफ डी एस यू राइट आर बाई आर, इट इज इक्वल टू 1 रेडियन। मिल गया? तो इसी चीज को हम लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहिए। क्या लिखना चाहिए हमको? तो व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, देन एंगल मेड बाय द आर्क विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द सर्कल इक्वल टू 1 रेडियन। देखो कितना आसान हो गया। सो लैंग्वेज में हम लोग ये लिखना चाहिए, व्हेन लेंथ ऑफ द आर्क
when length of the arc is equal to radius of the circle then angle made by the arc with respect to center of the circle is called 1 radian. तो कितना आसान हो गया तो डिफाइन करने में. So this is all about our plane angle and its unit radian. What is radian? That part is clear. Okay. And your conversion of degree to radian, that is already we have discussed. So next come to our next slide, that is solid angle. This is completely new to all of you. Solid angle. And ये किसके लिए अप्लाई होगा? 3D. तो प्लेन एंगल दैट इज अप्लीकेबल फॉर 2D. तो सॉलिड एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को किसका हेल्प लेना चाहिए? देखो, एक स्फीयर का हेल्प में ले रहा हूँ. स्फीयर तो 3 डायमेंशनल, उसके बाद में ऐसे ही डिफाइन कर रहा हूँ. देखो ये डायग्राम एज्यूम करो, दिस इज योर स्फीयर. इसको मैं थोड़ा, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड इसको मैं थोड़ा शेडेड कर रहा हूँ. देखो ये पता चल जाएगा ये क्या है. मैं बस मजाक में बस ड्रा कर रहा हूँ. ऐसे करने से थोड़ा पता चलेगा दिस इज स्फीयर, दिस पार्ट इज स्फीयर. ओके, दिस इज आवर कंप्लीट, दिस इज स्फीयर. एंड इस स्फीयर से एक छोटा सा एरिया को हम लोग कंसीडर करेंगे. लेट अस कंसीडर दिस. ये है तुम्हारा कट आउट एरिया. ये क्या है हमारा? कट आउट एरिया. एंड टोटल एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, उसको मैं मान रहा हूं ए. सपोज कैपिटल ए इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. जो कट आउट पोर्शन दिखाई दे रहा है तुमको, कट आउट पोर्शन विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? लेट अस थिंक, इट मेक्स एन एंगल ओमेगा. देखो ये जो कट आउट पार्ट ना, कट आउट पार्ट, कट आउट एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल एरिया को हम लोग मान रहे थे ए. आउट ऑफ द टोटल एरिया इट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन. लेट अस थिंक इट एज डीए. डीए का मतलब अभी तो डाउट नहीं होना चाहिए. व्हाट इज डीए? डिफरेंशियल पार्ट, डिफरेंशियल पार्ट ऑफ द ए. तो ये जो डीए, कट आउट एरिया ऑफ स्फीयर, लेट इट मेक्स एन एंगल डी ओमेगा. ये जो दिखाई दे रहा है डी ओमेगा, जैसे ये एंगल को मैं मार्क कर रहा हूं डी ओमेगा. यही है हमारा सॉलिड एंगल. तो सिंपली याद करो, तुमको रिकॉल करो, जो कोन आइसक्रीम हम लोग खा रहे हैं ना, बस उसको तो बस अंदर देखो, जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज योर सॉलिड एंगल. दैट इज वेरी इजीएस्ट एग्जांपल फॉर यू. तो ये जो कट आउट एरिया एंड ये क्या है? आर. आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. रेडियस ऑफ स्फीयर, very basic. From the basic we are proceeding towards the end of this chapter. Okay, ये तो शुरू हो रहा है, एंड तो नहीं हो रहा है, बस we are proceeding. तो अभी देखो कि जो सॉलिड एंगल, तो प्लेन एंगल पे हम लोग क्या फॉर्मूला लिखे थे? प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस. देखो ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ना, ये किसके लिए? ये प्लेन एंगल. ये किसके लिए? दिस इज फॉर प्लेन एंगल. बस. तो सॉलिड एंगल पे देखो, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? इज न्यू टू यू. डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वायर ए रेडियन. अभी के लिए मान के चलो बस. ये वो रिलेशन सॉलिड एंगल एंड ये क्या है? एरिया ऑफ द स्फीयर.
तो ये एज पर दिस फॉर्मूला डी ए ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर स्टेराडियन। तो मैं पूछ रहा हूँ अभी यहाँ पे डिफाइन वन स्टेराडियन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? क्वेश्चन क्या है? डिफाइन वन स्टेराडियन कैसे डिफाइन करने का हम लोग देखो। तो आंसर पार्ट में सेम एज द प्रीवियस को फॉलो करना चाहिए वो टेक्निक को। तो हमको पता है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर स्टेराडियन, बट एज पर द क्वेश्चन डी ओमेगा शुड बी इक्वल टू वन स्टेराडियन। दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चला? डी ए बाई आर स्क्वायर इट्स वैल्यू इज वन विच इम्प्लाइज डी ए इज इक्वल टू, फिर से हम लोग नीचे से ऊपर तक चलेंगे तभी जाकर ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है वी नो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाई आर स्क्वायर स्टेराडियन। तो कंसीडर व्हेन डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसका लैंग्वेज क्या है? डी ए का लैंग्वेज है तुम्हारा कट आउट एरिया ऑफ द स्फीयर and r square is the square of the radius of the sphere. So when cut out area of the sphere is equal to the square of radius of the sphere, at that moment what is the value of d omega? D omega will be da के लिए हम लोग r square पुट करो and डिनोमिनेटर पे r square अवेलेबल है that is equal to 1 स्टेप। अभी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे इजीली। कैसे? देखो तो डिफिनेशन क्या है, ऐसे हमको लिखना चाहिए when cut out area of the sphere, when cut out area of sphere is equal to square of radius of the sphere, square of radius of sphere, then angle made by the cut out area, then angle made by the cut out area of sphere with respect to center of sphere is called 1 स्टेराडियन। देखो इसी तरीके से हम लोग 1 रेडियन को भी डिफाइन किए थे। यस, तो दिस इज अबाउट द स्टेराडियन। अभी हम लोग फिर से वही सेम चीज को लिखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी ओमेगा। डी ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? देखो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू of solid angle. So to solve this, we know d omega is equal to dA by r square radian. So for d omega to be maximum, dA by, which implies dA by r square maximum, and r तो constant and r square भी constant होगा, that means for this dA should be maximum. And what is dA? dA हमको पता था cut out area of sphere. So what is the maximum surface area? That is the total surface area of sphere, that is equal to 4 pi r square. That means d omega maximum can be written as dA maximum divided by r square, and maximum value of dA is 4 pi r square divided by r square. तो कैंसिल होने के बाद we can write 4 pi n. This is the maximum value of solid angle. This is the maximum value of this solid angle. जो कितना आसान हो गया. This is our maximum value of solid angle. So this is about our plane angle and solid angle. So याद रखो plane angle is applicable in case of 2D and solid angle is applicable in case of 3D. So देखो starting from the physical quantity we have discussed their types, and after that we have discussed what is unit,
एंड टाइप्स ऑफ यूनिट्स एंड दो जो सप्लीमेंटरी फंडामेंटल यूनिट्स था हमारा के बारे में भी सब कुछ कंप्लीट हो गया। और एक चीज नोट पॉइंट के हिसाब से याद रखो, डिग्री मिनट एंड सेकंड के बीच में रिलेशन क्या है। रिमेंबर 1 डिग्री हम लोग ऐसा ही रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 मिनट, दैट मीन्स 60 सिंगल बार। So 1 degree is equal to minutes. And remember 1 minute is equal to 60 seconds. Combined we can write 1 degree is equal to 60 minutes is equal to 3600 like this. तो ये हो गया हमारा रिलेशन, बस इसको भी याद रखोगे। एंड और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू remember this figure and the formula, no need to derive this, just keep this thing in mind. So what actually I am searching for, any concept, yes, बस फिगर को देखो बस सब लोग। रेडियस को मैं आर मान रहा हूँ, दिस पार्ट हो गया हमारा। तो फ्रॉम द फिगर, हाँ हेडिंग क्या देना चाहिए हमको, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल दैट इज थीटा एंड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग क्या मानते हैं, ओमेगा। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हेडिंग। हाँ तो ये क्या है, दिस एंगल इज क्या, एंड यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है हमको ये वाला चीज, ये क्या है बच्चों, देखो दिस वन इज क्या, दिस सॉलिड एंगल एंड ये चीज क्या है, रेडियस। सिंपली तुम लोग याद रखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 - क्या, दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये फार्मूला हमको आगे जाकर हेल्प करेगा। यस, दिस फार्मूला विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग चैप्टर्स from entrance point of view and for the what easiness of numerical will help। तो आज का ये लेक्चर पे हम लोग बस स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइप्स ऑफ यूनिट्स सारा का सारा चीज कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक लेक्चर 2 ये भी हमारा बेसिक कंसेप्ट था। वेरी सुन विल स्टार्ट डायमेंशन एक्चुअली। तो इन नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा पेंडिंग रह गया, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट, उसको हम लोग कंप्लीट कर देने के बाद विल स्टार्ट dimension and application of dimensional analysis. Okay, so that's all for today's class. Thank you, have a nice day and put your comments, give the suggestion, and please like, share and subscribe our channel for the growth and development of our channel. Okay, and for the better development of students, share this content to your friends.
This is all about for today's class. Thank you. Have a nice day and stay tuned for next update.